Hello, good morning. How are you all? So, today is our EVS class. So, in our EVS class, we will do a quick recapitulation of our national festivals. आज हमारा EVS का क्लास है और EVS के क्लास में हम जल्दी से आर नेशनल फेस्टिवल्स का रिकैप्चुलेशन करेंगे. प्रीवियस क्लास में आई हैव ऑलरेडी टॉट यू अबाउट नेशनल फेस्टिवल्स. टुडे विल डू अ क्विक रिवीजन ऑफ नेशनल फेस्टिवल्स. सो अ नेशनल फेस्टिवल इज वन दैट इज सेलिब्रेटेड एवरीवेयर विद इन द नेशन. नेशनल फेस्टिवल उसको बोलते हैं जो हमारे पूरे नेशन में सेलिब्रेट किया जाता है. Let's see some national festivals. Now on this screen you will see some national festivals. Now the first festival is Republic Day. Republic Day. Republic Day. The first picture is of Republic Day, and Republic Day is celebrated on January 26. January 26. So on 26th January we celebrate which national festival? Republic Day. Republic Day. In middle, बीच में you'll see a chakra and a flag. Which festival is this? This is called Independence Day. Independence Day. And it is celebrated on 15th August. This month is also August. ये भी महीना भी कौन सा? अगस्त का है. So after 10 days we'll be going to celebrate 15 August. 15 August. Next important national festival is गांधी जयंती. ये किसकी फोटो है? बापूजी की. बापूजी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी. और गांधी जी का सेलिब्रेट कब करते हैं नेशनल फेस्टिवल? ऑन विच डेट? 2nd October. And what is the meaning of second? 2. You can say 2 October. So three main national festivals are Republic Day, Independence Day and Gandhi Jayanti. Republic Day celebrated on January 26. Independence Day celebrated on 15th of August. And Gandhi Jayanti is celebrated on 2 October. So learn the dates. Now next, read and answer the question. When do we celebrate Independence Day? हम लोग इंडिपेंडेंस डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 15 अगस्त. सो दिस मंथ, इस महीने हम कौन सा सेलिब्रेट करेंगे नेशनल फेस्टिवल? 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे. नंबर 2, व्हेन डू वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे? हम लोग रिपब्लिक डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 26 ज मीन्स जनवरी. जनवरी मंथ में 26 जनवरी को वी विल सेलिब्रेट रिपब्लिक डे. ऑन 2 अक्टूबर, 2nd अक्टूबर विल सेलिब्रेट गांधी जयंती. विल सेलिब्रेट गांधी जयंती. नेक्स्ट, when do we celebrate Children's Day? Now some more important festival and names and dates. When do we celebrate Children's Day? बाल दिवस, बच्चों का दिवस हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 14th November. 14th November. 14th November. When do we celebrate Teachers Day? Teachers Day कब सेलिब्रेट करते हैं? 5th September. 5th September. 5th September. Teachers Day and Children's Day. Children's Day 14th November, Teachers Day 5th September. Now here are the questions. So you have to learn all these questions. What is our national anthem?
Jana Gana Mana. In the morning assembly, we used to sing Jana Gana Mana. This is our national anthem. Question number 2. What is our national song? हमारा national song कौन सा है? वंदे मातरम. वंदे मातरम. Number 3. The national animal of India is tiger. National animal of India is tiger. The national bird of India is peacock. National bird of India is peacock. The national tree of India is banyan tree. National tree of India is banyan tree. The national flower of India is lotus. National flower of India is lotus. The national fruit of India is mango. National fruit of India is mango. National river of India is Ganga. National river of India is Ganga. Our national flag is called Tiranga. Our national flag is called Tiranga. The national sport of India is hockey. The national sport of India is hockey. Now next question is, the 4 seasons are summer season, winter season, autumn season, spring season. Summer season, winter season, autumn season, spring season. Last question is, name 2 medicinal trees. Name 2 medicinal trees, that is neem and peepal. Neem and peepal. So here are the questions for the month of August. Learn all these questions as well as some questions here. When do we celebrate Independence Day, Republic Day, Gandhi Jayanti, Children's Day and Teachers Day? These 5 dates. Okay? So learn all this work. Now students, work for today that you have to do it in your notebook. आज का वर्क मैचअप्स जो आपको नोटबुक में करना है. Now matching में you have to write first of all national festivals and one side you have to write dates. Now here on number 1 E na in, इतना you can read ना, in. So in से कौन सा start होता है? Independence Day. Independence Day कौन सी डेट को आता है? 15th August. नेक्स्ट र से कौन सा होता है? रिपब्लिक डे. एंड रिपब्लिक डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 26 जनवरी. नेक्स्ट इज ग से कौन सा आता है? गांधी जयंती, दैट वी सेलिब्रेट ऑन 2 अक्टूबर. नेक्स्ट इज ट टीचर्स डे, वी सेलिब्रेट ऑन 5th September. नेक्स्ट इज सी से कौन सा आता है? चिल्ड्रंस डे, दैट वी सेलिब्रेट ऑन 14th November. सो दिस इज वेरी ईजी. Only what you have to do, you have to learn dates as well as festivals name. Okay, so do this work in your notebook. I hope now the national festivals have been clear to you. So do practice and do your work in notebook. Good day. Take care.